Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 9, the living organisms and their surrounding. So, what are the living organisms? You know well, the plants and the animals are called the living organism because they show all the character of the living organisms and their surrounding, in which the living organism means plant and animal live, that is called their habitat and the surrounding. In this chapter we will study about their habitat and the adaptation and different type of habitats. So, organism and their surrounding में habitat and the adaptation. Habitat is a living or a dwelling place in which any organism live. It is a special environment in which an organism live and grow. You know very well, any kind of species also do reproduction and flourish on a large scale. So habitat can be defined as a place that provide food, shelter and the necessary climatic condition. A habitat, it can be defined as a place which provide food, shelter and the necessary climatic condition. You know very well, for the polar bear, which climatic condition are the best? Snowy. आपको पता है हिल स्टेशन पे पोलर बेयर मिलेगा तो वो पोल साइड पर ही मिल सकता है. अगर मैं शीप की बात करूं तो शीप भी आपको पता है माउंटेन रीजन पे. अगर फिश है तो उसके लिए बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगी? रिवर और ओशियन. इन दिस वे वी कैन सी, तो जहां पर उन्हें प्रॉपर फूड मिले, शेल्टर मिले एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन उनके अकॉर्डिंग हो, एंड इट इज वेल सुटेड फॉर द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, breed and the flourish, and that place must be suited for the organism to survive in a better way, to breed and the flourish. So habitat can also be defined as a place, locality or part of a region where an organism lives and is adapted to the physical condition there along with the other organisms, जहां पे वो अपने अदर ऑर्गेनिज्म के साथ आसानी से फैमिली बॉन्ड में रह सकते हैं. सो हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कुड बी वेरी स्मॉल एरिया लाइक द गार्डन, like you know, it can be fresh water, it can be garden area and it can be river, pond, ocean and it can be forest also. So example, for the frog, the fresh water pond is their habitat. And for the sparrow, the habitat is tree. For the tiger, their habitat is forest. And for the whale, the best habitat, that is ocean. So, because different kind of features, different kind of organism have different kind of features, so they need different kind of climatic condition around them, in which they can get their food. If we say that the habitat of the Indian tiger is Himalaya forest, then these forests must have climatic condition like the suitable temperature, rainfall, etc. Habitat जहां पर उनको best suitable climatic condition मिले, उनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर, उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर को वो टॉलरेट कर सके. प्रॉपर रेनफॉल फॉर द टाइगर टू सर्वाइव, तो टाइगर के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट, प्रॉपर टेम्परेचर एंड द प्रॉपर रेनफॉल मस्ट है. शुड ऑल्सो हैव अदर स्मॉल एनिमल्स फॉर द टाइगर सो दे कैन हंट एंड गेट देयर फूड. टाइगर, यू नो, इट इज अ कार्निवोर. सो टाइगर, अगर वहां पर अदर एनिमल नहीं होंगे तो वो कैसे उनको हंट करके उनसे अपना फूड गेन करेगा? सो द अदर एनिमल मीन्स द एबिलिटी ऑफ फूड इज मस्ट ऑल्सो प्लांट टू प्रोवाइड द शेल्टर. और अगर वहां पे फॉरेस्ट या प्लांट नहीं होगा तो उसे शेल्टर भी तो चाहिए होगा ना. वो एकदम हाई टेम्परेचर पे ओपन में तो नहीं रह सकता. सो ही मस्ट नीड शेल्टर ऑल्सो, सो टू हाइड itself
also told you that for the tiger, the best habitat that is forest, and for the whale, best habitat that is ocean. Now, what are the components of a habitat? A habitat is made up of two type of component. First is biotic component and the second is abiotic component. You know, in the biotic component, there are two most important factor, that is plant and the animal. Biotic, which are living organisms, and the plant and animals are the living organisms. तो बायोटिक में अगर हम बात करते हैं तो प्लांट एंड एनिमल आते हैं, पर जब हम अबायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं, मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट विच इज वेरी मस्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट मीन्स प्लांट एंड एनिमल. हमारे अकॉर्डिंग अगर सराउंडिंग नहीं होगी, वी कांट सर्वाइव. सो अबायोटिक फैक्टर्स में आता है टेम्परेचर, rainfall, soil, rock, water, etc. So it means the non-living component like air, water, soil, sunlight and rainfall, etc. Humidity, etc. And the biotic factor, you know very well, the living organism, only and only plant and the animal are called the biotic component. So it includes producer like the green plant which contain chlorophyll in them, so they can prepare their own food and for others too. आपको पता है ना, green plant जो food prepare करते हैं, they use that food in their growth and maintenance, and the excess of food is stored as the starch. So this extra food, it is provided for the herbivores, and so for herbivore can take their food from the producers means green plant, and the carnivore are dependent on the herbivore. So यहाँ पर एक चेन है, आपने फूड चेन एंड फूड वेव चैप्टर नंबर 1 में देखी. सिमिलरली तो इट इंक्लूड प्रोड्यूसर्स लाइक द ग्रीन प्लांट, herbivores and the carnivores. तो ये सब मिलकर बनाते हैं बायोटिक फैक्टर्स. In a habitat, all biotic and abiotic components continuously interact and influence with each other. It brings a balance in a habitat and different types of organisms coexist. You know, if our abiotic component in our surrounding is not suitable for us, then we cannot survive. So there is a mutual relationship between the abiotic factors and the biotic factors. They both are complementary for each other. अगर एनिमल और प्लांट्स को सरवाइव करना है तो अबायोटिक कंडीशन उसके अकॉर्डिंग होनी मस्ट है, तभी हम वहां पर फ्लोरिश हो पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे. सो द डिफरेंट हैबिटेट हैव डिफरेंट कंडीशन, एंड सो एनिमल एंड द प्लांट हैव द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल एंड द बिहेवियरल adaptation to survive and flourish in their respective habitats. And now the third is adaptation. You know what is the adaptation? Any animal like the plant and the animal means any organism which have a special features or some special habits to survive better in their surrounding. Like frog can get the insect by its sticky tongue. फ्रॉग में जो स्टिकी टंग होती है उससे वो अपना फूड गेन करते हैं, ये उसका स्पेशल फीचर है. और उसके जो लेग्स होते हैं, पैडी लेग्स, उसकी वजह से वो इट कैन पर्च ऑन द ट्रीज, इट कैन स्विम इन द वाटर ऑल्सो, एंड इट कैन गो ऑन द लैंड साइड ऑल्सो. इट इज अ स्पेशल फीचर. इन द बर्ड्स इट हैज अ विंग्स टू फ्लाई इन द स्काई, एंड इट कैन लिव ऑन द nest on the tree. So आपको पता है फ्लाई करने के लिए स्काई में जाएंगे, पर रहने के लिए तो ये वापस से नेक्स्ट में ऑन द प्लांट ही ये रह सकते हैं, ट्रीज के ऊपर रहती हैं. सो बर्ड्स को भी अपना फूड गेन करने के लिए लैंड पर आना ही पड़ता है. तो सम बर्ड्स आर डिपेंडेंट ऑन द रिवर, इन द रिवर्स एंड द ओशियन फॉर देयर फूड. आपको पता है फिशेस, इंसेक्ट्स वगैरह ये सब खाते हैं. एंड सम बर्ड्स जिसको हम ग्रेन पार्टिकल्स डालते रहते हैं, आपको पता है अच्छे से. So for example, the cactus and the camel,
lakes, and this is because they have a special structure or the modification which help them to adjust to that habitat, and these modifications are called as adaptation. Means these special features which help them to survive in their climatic condition, to survive in their habitat, that is called adaptation. For like the polar bear आपको पता है polar bear has the long hair and thick fat layer on their skin, so they can tolerate the winter of the polar region. Now, the special features or the habits which enable a plant or an animal to live in a habitat, that is called adaptation. Now, I think you know very well that what is the habitat? What is the habitat? Components of habitat. Components of habitat, abiotic and biotic. And what is the adaptation? The specific features, habit of the organism, so it can live in their surrounding better. So thank you for watching this video. In the next video we will study about the next topic about the different habitats.